छोड़ के आज का एक लेक्चर में तेरा पर बोलने ले रहा है तो हम ये देखते हैं ना तो ऐसी चीज़ में तो अपट्रस्ट के बोले वगैरह हाँ वेट वो अलग से ट्रस्ट वगैरह तो कुछ नहीं आता है Interesting lyrics. Oh, good evening. Anish Desai is guest today. Why you did not come today, Anish? Is the speaker on? आर्चिमेडेस का हमारे साथ पक्का देख रहा होगा हाँ भाई अभी 3:30 बजे चालू होगा रहेगा 5 बजे तक 100% देख रहा हूँ मुझे ना ज़्यादा टाइम नहीं मिला तो स्कोर अभी एडमिट नहीं हुआ एडमिट अभी कर रहा हूँ What happened, Amit? Anish? Yes, sir. What happened? Sir, I'm sick. That's why I'm online. You're what? Sick, sir. Not feeling well. Oh. Okay, tell me, where were we in the last class? I have to get my fluids We started Upthrust in fluid and what topic we had done? You just gave the diagram as okay, so
You were present in the last lecture, right? So I think we discussed about all the three cases of floating also, right? Floatation. When the not present again last time. So what is upthrust? So whenever body is submerged in liquid, right? Whenever a body is submerged in liquid, it experiences an upward force due to liquid, right? This is called upthrust. Okay, so when you must have seen it when you try to like put any mug inside the bucket, that mug experiences upward force. Okay. So, and that is the reason why a boat floats on the free surface of water, right? So, this property of liquid to exert upthrust is called buoyancy. This property of liquid to exert upthrust is called on bodies submerged on board is called buoyancy. Okay, this property is called buoyancy. And therefore, the upthrust force is also called as buoyant force. Therefore, hence, the upthrust is also called is it DOU or DUO? Let's check. Buoyant force. DOU. DOUY, right? Buoyant. So DU. Right, DOU. DU. DUO, right? Okay. And buoyant force. Immediately come out. So buoyant force. Okay. Upthrust का symbol क्या है? FB. Okay. So this is also so buoyant force and upthrust are same thing. ठीक है. तो अब देखो. So suppose if you have a container, there is a liquid in it. So there are three situations. Like there are three different bodies. One is fully submerged. One is totally up, right? One is partly submerged. These are various cases possible. And one is at the bottom. One is synced. This body is, let's say there are four bodies. 1, 2, 3, 4. What is one? Floating.
फर्स्ट बॉडी में क्या एग्जांपल है? फ्लोटिंग with floating while fully submerged. ठीक है ना? His body is fully submerged. Second, floating. Right? So it is not possible to just be above the surface. This is possible. Or partly submerged. Okay, let's make it only 3 cases. So partly submerged and partly outwards. So this is the second case. And this is the third case. While partly submerged. And third case is sink. Try to find out when this happens. All these 3 cases we already discussed. Okay, last time. Extra class. ठीक है, so अभी क्या है देखो, what happens is every body has a weight, right? So weight always acts downwards, right? And where does the weight acts? It acts at the center of gravity of the body. And we said every body which you are trying to submerge in liquid experiences upthrust. So where does the upthrust work? It acts at center of buoyancy. So which is the center of the gravity of the replaced liquid. Understand? This is called center of buoyancy, point B. So let us say this much liquid is replaced. So center of gravity of that replaced liquid is called the center of buoyancy. Okay. So so that force acts upward. So buoyant force acts at this point. Okay, so this is your upthrust. Got it? There are 2 forces. One is acting at the center of gravity, which is the weight of the body, and they are in the same line. Right? So when the body is floating, right? So depending upon how it is floating. Now in this case, when the body is fully submerged, so in this case, both the centers will collapse or merge with each other. The same here, it will be upthrust, and here it is weight. Okay. Now what in this case? In this case, upthrust is 0. That's why it is sink. So it has only weight only in this case. The upthrust is acting, but that upthrust is very small. So the net force is downwards. Whatever is that, but once it is at the bottom, there is no upthrust. So that will be 0. Got it? Okay. So for a body which is sink inside, the upthrust is negligible. Just the weight which is more. So what happens while the body is float? So during flotation, so this FB is equal to weight of the body is equal to upthrust during flotation. For which type of body? For this type of body. During flotation. So first case is for fully submerged body.
Got it? So in this case, so what is the net weight of the body? The force downward is equal to force upward. So what is the net force? Zero. So during flotation, what is the weight of the body? So weight of the body is zero. Therefore, weight, apparent weight, that's why it is called apparent weight. Of body or floating body is zero. Is this understood? Because the weight is balanced by upthrust. Okay. Even otherwise, if you try to put any, now let's say this kind of a body. So when you put the body inside, obviously it is experiencing upthrust. So therefore its weight will be less when it is in air, because water is exerting upthrust. So because of upthrust, the bodies feel lighter when they are submerged in liquid. Okay. So we can just add one point here. Hence, bodies apparent weight, bodies weight reduces when submerged in liquid. This happens due to upthrust. But during flotation, it becomes zero. Which weight? Apparent weight. Okay. So what is the loss in weight? It is equal to the upthrust. Because that is the opposite force. So loss in weight is equal to upthrust, right? Zero. And loss in weight. So these are the concepts. Loss in weight of submerged body equal to upthrust. Is this concept clear so far? What is center of buoyancy? What is center of gravity? So let me write those notes also. Center of gravity is a point where the weight body acts. Whenever I say weight of a body, it is always in air. Okay. Then what is the center of buoyancy? Buoyancy BU4 is the center of gravity of liquid displaced by submerged portion of body. Of the body. Okay. So always the center of buoyancy will be below the center of gravity, but they are in the same line, right? Because if less liquid, so obviously the buoyancy will be center of gravity of the displaced liquid. So B will always be below G, but in the same line. B can never be above G. Okay. So for a fully submerged body, B will be along with G, right? Is it clear? Now, what about for
What this is called fully submerged body. What in this case? In this case, the body is floating. What is its apparent weight? Less than 0 होगा तो ये इसको लेके उड़ जाएगा और 0. Got it? This is the concept which you have to understand. As long as the body is floating, its apparent weight has to be 0. Okay. But are the upthrust acting on it same in both the case? No. So with less upthrust, it is able to hold the weight of the body. That means this body is lighter than this body. Got it? So, so this is case 1. Case 2 is weight is less than upthrust for partly submerged body. Okay. So what about this? So in this case, weight is greater than okay. So here in this case, FB is greater or equal to W, but here FB is less than W. Right. This case is FB is greater than W. This is FB is equal to W. Here FB is less than W. So as long as upthrust is greater than or equal to W, the body will flow. सबको समझ आ गया? तुम्हें ये क्यों जानना है? नीलेश है, स्पंदन है, अनीश है, 3 जन है, 7 स्टूडेंट्स हैं। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट का चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो बाकी चैप्टर में और कुछ है नहीं समझ। लास्ट टाइम भी हमने इतना ही डिस्कस किया, ठीक है? तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछो। लास्ट क्लास में मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि अपथ्रस्ट लगता क्यों है। सर वो बॉडी इतना लिक्विड रिप्लेस करती है उतना अपथ्रस्ट होता है ऐसा कुछ। क्यों लगता है अपथ्रस्ट? वो भी डिस्कस करता हूँ एक बार। Shall I raise or no, sir? Now we want to calculate on the magnitude of upthrust. ठीक है? ये कितना होता है? Like weight is equal to mass into gravity, right? वैसे upthrust कितना होता है वो निकालें। But nobody will believe you. Exactly. Nobody will believe you.
looking at you नहीं लगता है। वेट वगैरह भी तो ठीक ठाक ही है। नहीं तो How problem much is your weight? around 70. वेट तो ज्यादा ही है एक्चुअली। पर कैसे इम्यून सिस्टम अभी वैसे 35 एज में ज्यादा है। इससे थोड़ा है। मैं 40 केजी के एक्स्ट्रा। ये उसकी हाइट भी तो ज्यादा है। Weight बहुत ज्यादा है। 6 है ना। Sorry, Around 6 है। ठीक है। नाम मात्रा सा। Whatever. अरे सारे 10वीं वाले बच्चे मेरे से बड़े लंबे छोटे सब अगले तगड़े खाते पीते घर वाले हैं। Sorry, मुझे लगता है हम अकेले हैं। अभी तो मेरे को लगता है लोग भूख देंगे तो उड़ जाएंगे। मेरे क्लास में मैं करता हूँ मेरा दोस्त है। बास्केटबॉल प्लेयर्स अच्छी बात है बट we need a strong India so that these Westerners can be kept beyond the borders. सर मुझे कुछ करना भी चाहिए बस सॉन्ग होने चाहिए रहता है। क्या करें तुम बड़े लोग लिखना बार करेंगे। Very good. Next we will see you can write in the end the center of buoyancy is below center of gravity for body surface body. So they act in the same line, right? One acts upwards. So this point of significance क्या है? Upthrust acts at the center of buoyancy in upward direction. In upward direction. ठीक है और वेट तो तुम्हें पता ही है एक्स एट जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन तो ये तो वो भी लिख सकते हो वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन ठीक है इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जब हम पानी में डुबाते हैं तो वो हल्का फील होता है जब भी हम स्विमिंग पूल में उतरते हैं तो हमारे को क्या फील होता है हमारा वेट कम होता है because of the contrast. Okay, now can I erase it? अब हमको निकालना है अपथ्रस्ट का एक्सप्रेशन हाउ मच is upthrust in terms of in terms of the liquid and body properties. Okay, like how much is the weight of the body? Weight of the body is equal to its mass into gravity mg, right? वैसे upthrust कितना होता है? So first let us understand what is the cause of upthrust. See, when an object is, let us say this is liquid, and an object is, let us say this object is of cylindrical type. Okay. It is put inside liquid, right? So
it will experience pressure P1 from the top. Liquid will exert pressure on it, right? Then pressure P2 from up. Then it will experience pressure from this side and pressure from this side, right? Okay, P and P. Correct? So let us say total of all the pressure from right side is just one pressure P. This is total pressure. Now, what is pressure on the liquid as we go from top to bottom? Does it increase or decrease? Increase. Just a second. So pressure formula is what? H rho G. So as you go below, the height of the liquid column increases, pressure will increase. So obviously P2 is greater than P1. सर नीचे जाके थ्रस्ट सेम रहता है ना तो प्रेशर बदलता है ना Thrust क्योंकि बदलेगा, thrust वाला- thrust कहीं बदलेगा, समझो बॉडी पार्टली डूबा है तो उसपे कम थ्रस्ट लगेगा, जब पूरा डूबा हुआ है बॉडी तो उसपे मैक्सिमम थ्रस्ट लगेगा। Got it? पूरा डूब गया तो मैक्सिमम थ्रस्ट लगेगा, एक बार पूरा डूब गया फिर वही थ्रस्ट लगेगा कांस्टेंट। ठीक है? So now, so what is the cause of upthrust? It is the difference in the pressure in the top and the bottom level of the body. Okay. So it is a difference in liquid pressure above and below the body. The sideways pressure does not matter because whatever is the pressure at this level, it is same at this level also in all directions. So side pressure will cancel each other. Net pressure difference is only on top and bottom. Okay. Now what is the relation between pressure and thrust? This is equal to thrust upon area. So what is the thrust? Thrust is normal force. So F is equal to T into A. ठीक है? तो ऊपर वाला फोर्स क्या लगेगा? तो यहाँ पे क्या मिलेगा? P2 is greater than P1, right? Right. So let us say this height is H2. And this height is H1. Okay. So now what is F1? So this P2 will cause force. F2 is equal to P2 into A. A is the area of cross section. So A is same for both up and below cross section. And F1 is P1 into A, right? Okay. So therefore, F2 is equal to how much? P2 कितना हो जाएगा? H2 rho and G. And F1 कितना हो जाएगा? H1 rho and G into A. Into A. A to right. So therefore, F2 is greater than F1. So the bottom force is more than up force, and we are not considering W. We are only calculating liquid की वजह से क्या force लग रहा है. So there is a net upward force. Therefore, F2 minus F1 is equal to net upward force. FB say. Okay, so ये जो net upward force है उसी को हम क्या बोलते हैं?
which is upthrust. Okay, so therefore FB is equal to F2 minus F1. अब ये क्या है F2? So simplify. So this will be H2 minus H1 into A. ठीक है? Rho G. We just rearranged after subtracting. Now H2 minus H1 is this height of the cylinder. Isn't it? Okay. So area into height is volume. So H2 minus H1 into A is volume of the body. So this is the expression of upthrust. Okay. Now what is this rho? This is the density of liquid. This is density of liquid. So everywhere it is density of liquid. Isn't it? But what is this V? V is the volume of the body. So if this is density of the liquid, this will also be density of the volume of the liquid displaced. Okay? Volume of liquid displaced into density of liquid is mass of liquid. So this is equal to ml into G. ml G is equal to weight of the liquid displaced by this body. So upthrust is always equal to weight of liquid displaced by the submerged body. So this is the formula for upthrust, which is equal to weight of liquid displaced by the body. Right? Submerged. Okay, so this upthrust is always equal to the weight of liquid displaced by the submerged body. This is nothing but Archimedes' principle. This statement is Archimedes' principle. Okay. So let's see what is Archimedes' principle. This is Archimedes. Archimedes का क्या spelling है भैया? समझ आ गया? तो अपथ्रस्ट को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? What is ml? Mass of liquid displaced. So I hope you have understood it. So cause of upthrust and what is the and expression for upthrust. ये सब निकाल लिया. अभी तुम्हें सब कुछ समझ आ जाना चाहिए कि अपथ्रस्ट क्यों लगता है. ये साइड से क्यों नहीं लगता, क्योंकि सेम लेवल पे इधर से भी फोर्स लग रहा है, उधर से भी इक्वल फोर्स लग रहा है इसलिए. लेकिन अप डाउन में फोर्स डिफरेंट है. Why F2 is greater than F1? Since H2 is greater than H2. है ना? अभी H2 बड़ा है, बाकी सब तो सेम ही है. रो L G A वो तो दिख रहा है हाइट H2 बड़ा है, इसके लिए F2 बड़ा है.
Okay, understood? So. So with this, we have completed the first chapter, right? The first unit. Just we'll write the statement of Archimedes' principle. So you can write the statement of Archimedes' principle. Then experimental verification. Yes. So it is HIMEDS. Let's write down what is Archimedes' principle. Archimedes' principle. What is the Archimedes' principle? Write down. It states that when a body is immersed partially or completely in a liquid, it experiences upthrust. It experiences upthrust, which is equal to weight of the liquid displaced by it. Weight of liquid displaced by it. Okay. What I have just stated is this blue box. Just verify it to the book, blue book, page number 106. So everybody understood what is Archimedes' principle? Huh? So what is the consequence of upthrust? Body feels lighter. When it is Submerged. inside liquid. Lighter. This is the consequence. Yeah. And what are the factors on which upthrust depends? Liquid density. Gravity. Yes. And gravity नहीं ना. Gravity at that place generally is constant. But सर moon से लेके गए तो कम हो जाएगा. So when but generally तुम experiment एक ही जगह पे अगर कर रहे हो वहाँ पे gravity नहीं change हो रहा है. But ये वाली change हो सकती है. अभी तुमने बड़ा body लिया छोटा body लिया तुम्हें immediately समझ आ जाएगा. इससे upthrust ज़्यादा लग रहा है इससे कम लग रहा है. ठीक है. Clear? Now we'll do experimental verification of upthrust. Next topic is experimental verification of upthrust. Experimental
Okay. So for that, the first experiment is like, suppose we have a weighing balance. So here you have hang two cylinders. Right? What have you done? You have hang two cylinders. This one is empty. Let's call this as A and this as B. So, right? So this one is solid. Okay, this one is hollow cylinder, but identical, same volume. Okay. Now this is balanced with some weight on it. Right? Now what is done is, when it is, what we are now doing is, let's say it is kept on some table like this. This is how it is kept. Okay. So now what we are doing is, we are bringing a bringing some cylinder. How is it? We are only submerging the lower part fully into liquid. Okay, so we are submerging this part inside liquid. Okay, let us say we did some arrangement. We have some arrangement by which, let us say, some jet kind of an arrangement by which we raise the bigger full of water. Okay. So obviously, initially when the weight was balanced, when we bring this water filled beaker upwards so that the lower cylinder is submerged, then what should happen is it will experience upthrust, right? So that means left hand side weight will become less than this weight. So what should happen? It will tilt like this. Okay, it will tilt like this. So then what is done is, this liquid, same liquid, is poured inside. Okay, and it is made full with this liquid. Okay, these two cylinders were identical. This one was solid, whereas this was hollow. Then what do we see? Once the liquid is poured full, right, then it gets balanced again. When is it possible? That means whatever is the weight of the liquid is balancing it. That means so it has countered the upthrust caused by liquid. So upthrust, whatever was acting, that is balanced by this weight of liquid. This proves. So therefore, Fb must be equal to whatever is the weight of liquid displaced by cylinder B. Because what cylinder B did was, it only displaced the liquid equal to this volume. So when we refill that much amount of liquid, it balances again. So this is the first experiment. Okay, understood? So when you will read it in the book, you'll understand. The next experiment is, this is clear to everybody? है ना? इसमें क्या है? Cylinder A is hollow.
and volume of A and B is same. Is same. Okay. Cylinder B is solid cylinder, isn't it? A is solid. अच्छा ठीक है हमारे केस में B is solid. With B being solid cylinder. ठीक है ना? Can I go to explain the next one now? Next experiment. So in the next experiment, I'm just removing this. This was the first experimental verification. Second. So what we have now is spring balance. What does spring balance tell you? So whatever is the spring balance, this will tell you the weight. Okay, that is marked from 0, 100, 200, 300, 400. So this is 0, 100, 200, 300, 400, let's say 500. It can measure weight till 500. So, right. So here is the weight which is hanging. So in air, right, when this weight is hanging in air with the help of spring balance, it shows the weight as 300 gram force. So spring balance always gives you the weight. Okay, so this gives 300 gram force. Now when this kind of water filled beaker is brought up, then what it is showing? Right? It is showing 200. Okay. So in the second case, it shows this weight goes here, 200 grams. This is what it is showing. When is it showing that? When it is was in water. Okay. So what has been done is there is this is called what kind of flask? It has got a special name. Eureka, right? This is called Eureka can. Yeah. And it has this opening which is called spout. S-P-O-U-T. So water in this can was filled such that it was almost at the edge of the spout. When we now submerge this thing, then it will obviously the displaced water will be falling somewhere. So this is a measuring cylinder. This is also kept somewhere. This is your measuring cylinder. Measuring cylinder with the marking. Okay, so it shows 100 milliliter. How much water has been displaced? 100 milliliter, right? And how much weight it shows is reduced from 300 to 200. That means what is the reduction in weight? 100 gram force. Okay, it is 100. पानी भी हो पानी. ये कितना वाटर इधर बाहर आया? 100 ml बाहर आ गया. Experimentally we see that.
So we now need to calculate what is the weight of this water. How will you calculate weight of the water? So 100 volume of the liquid is known to us. It is water, so density also is known. Then gravity, it will be that much here. Right? So volume is how much? 100 ml. So 100 ml is how much in centimeter cube? 1000 ml is 1000 centimeter cube. So 100 ml will be 100 centimeters. 100 centimeter cube. So this is 100 centimeter cube. And density of water is 1 gram per centimeter cube. What is the density of water? So this is 100 into 1 gram, which is 100 grams. So the weight of 100 milliliter of water is 100 grams. By density and because what is this? This is mass only, no? So mass into gram force becomes weight. Okay. So both the experiment verify. So how much is the reduction in the weight? What is the weight loss? It is equal to the weight of the liquid displaced by the submerged portion of the body. So these two experiments verify which principle? Archimede's principle. So have you understood it? Hence, the verification of Archimedes. Exactly. So if you still have any doubts, you can ask me. This is the best I can do to tell you. Right? Okay. So the last part is which body will float. And we have already covered in terms of forces. Right? The same thing can be translated in terms of density. Right? So because flotation किस पे possible था? Either greater or equal to weight of the body. So express it in terms of this is equal to V density of the body into gravity. So V and G will be cancelled because volume तो दोनों का same है. So what you get is, so this is the condition for floating body. Upthrust has to be greater than or equal to weight, and it can be in terms of volume and density. It can be expressed like that. So volume the same here because volume is equal to the volume of the body which is displacing the liquid. The volume same, gravity same, and in terms of density, this is how it is. So whenever the density of the liquid is either greater or equal to the density of the body, then the body will float. Else it will sink. The body will sink when density of liquid is less than density of body. As simple as that. Okay? If that is floating condition, then what remains in this? So in this condition, body will sink, which will result into upthrust less than this. Upthrust is less than weight of the body. So weight is greater. It will pull the body down. Okay?
Okay, so with this we are through the chapter. Unit 8. I'll give you some time. After 5 minutes, one more lecture. इनको मेरे को यहाँ में 10 दिन आंसू फिर मिला है क्वेश्चन में and my wife हाँ ऐसे भी है पर बड़े द्वारा गाड़ी है टेंथ बढ़ा शायद क्या भूल गए
ये कभी दिमाग रहता है चलेगा अब उसके बाद जाकर खा के आते हैं अरे थोड़ा एक काम कर जल्दी रहेगा थोड़ा थोड़ी ऐसा करके वैसे खा लेंगे क्योंकि द्वारका मेरे को अकेले को नहीं रहने देगी ये तो वैसे भी मैं खरीद लेती हूँ तो मेरा खा लेंगे वैसे भी टाइम पास करेंगे हाँ देखो हाँ जी, किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन ऑफलाइन? तो भी सब लोग फ्लोट करोगे पानी में डालने के बाद? हाँ? breathing की उधर प्रॉब्लम होती है मुझे भी स्विमिंग सीखना है यार, ये एक चीज है जो मुझे आती है। I know how to swim and it's really good now and exciting. Starting में just pain to learn it, but once learned then It's very सर बाद में मजा आता है okay. ये ठीक क्लास से भी है फिर तीन को First time सीखने में difficult है, हाँ बस डेडिकेशन होगा तो सब हो जाता है लेकिन ऐसा भी है कि सीख लिया फिर इजीली हो जाता है। Isn't the muscle strength or breathing. सर इट्स बैलेंस It's what I want. ब्रीदिंग इज बैलेंस भी सर थोड़ा बॉडी पे करना Balance आपको हो जाता है. If you know how to get a slip, it's very easy to do. I know how to ride cycle, motorcycle, Balancing is easy, but breathing आना चाहिए. Breathing ही होती है basic चीज़ है पहले. उसके बाद वो breathing जैसे हम अभी नॉर्मली कर रहे हैं वैसे breathing से नहीं सुन कर सकते। सांस लेके थोड़ा ऐसे अंदर जाता है you need to have like a perfect motion. ऐसा move करके you have to breathe from here, you have to keep your head ऐसे down. करके एक तरह से you can only. So there has to be constant presence of air in your lungs. क्योंकि origin से ना मुंह बीच से पानी के अंदर जाता है ना तो वो ऐसे पानी के अंदर सांस ले ऐसे फिर पानी चला जाएगा मतलब ब्रीदिंग एंड सांस लेके then you have to go inside water, then come out, breathe in, again go inside. ऐसा है? ऐसे हम करते हैं it needs to be like a fluid motion to do it. कैसे Like it will be fast. Freestyle में वही सिखा रहे हैं. मतलब सर अगर नॉर्मल कर रहे हो ना तो अच्छा हाथ पर लेते हैं आपका फेस एक टाइम इधर होता है फिर से इधर होता है ऐसे होता है तो आपको आपका ब्रीदिंग का और फेस का पूरा कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है वो एक चीज आ गया तो बस हो गया वो करना आसान है. वो पता नहीं लगता कैसे करता है. हाँ पर हाथ पे ना दर्द करेगा ये हो गया। एक बार आपको कोऑर्डिनेशन आ गया तो इजी हो जाता है Let's see. वो तो स्विमिंग पूल और कोच होगा जहाँ पे सीख जाऊंगा। मेरे सोसाइटी में ही है इसलिए मैं वहाँ पे ही थी अच्छा टाउन सोसाइटी अच्छा, फार्म वाला स्विमिंग पूल चालू है क्या? हाँ सर वो तो लॉकडाउन कब का खींचे हुए हैं लॉकडाउन ओके, अभी ये चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है समझने के लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर में क्या है? रिलेटिव डेंसिटी and its measurement by अभी application of Archimedes' principle है। So relative density, relative RD। अभी हम रिलेटिव डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? रिलेटिव डेंसिटी, it is the ratio of density of the substance upon, so relative density किसका? Of any substance is equal to its density
डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, जिसका रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, उसका डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर at 4 degrees Celsius. Why density of water at 4 degrees Celsius? Because 4 degrees पे density of water highest density उसकी उसी temperature पे होगी, ठीक है? So that is why we are taking density of water at 4 degrees Celsius. So इसका formula क्या बन गया? Therefore, relative density of any substance is equal to density of substance divided by density of water. तो रिलेटिव डेंसिटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हमें किसी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी पता है तो हम उस सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर नोन है, स्टैंडर्ड है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी पता है तो हम उस सब्सटेंस की डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर नोन है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी टू फाइंड रिलेटिव डेंसिटी इज सो इजी फॉर एनी सब्सटेंस एक्सपेरिमेंटली। अभी जो हमने 2 एक्सपेरिमेंट किए उससे तो हम रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, हम निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, और फिर उसको डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दो, हमको उस सब्सटेंस का डेंसिटी मिल गया, ठीक है? सो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये समझ में आया व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? सो सिग्निफिकेंस क्या है इसका? Is that its knowledge lets us calculate the density the substances density. Substances density as density of water is known. ठीक है? Second thing is, it is very easy to find out RD of any substance. Experimentally. तो हमें हमको यही देखना है कि हाउ टू फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। समझ आ गया? तो अब देखो, तो ये डेफिनेशन है रिलेटिव डेंसिटी का, अब इसी को यूज करके हम निकालेंगे। So what are the different interpretation of this definition? So from here, so can we write it as equal to density of substance into volume and density of water into volume? Can we multiply by same volume above and below? You can do that. Matlab, so then this becomes mass of substance divided by mass of water for same volume, both the things of same volume. दोनों का, सब्सटेंस का भी वॉल्यूम और वाटर का भी वॉल्यूम सेम हो सकता है। जैसे हमने सब्सटेंस को वाटर में डुबाया, अब ऐसा पॉसिबिलिटी है
ये दोनों का वॉल्यूम सेम है ना। अब इस पे G और G मल्टीप्लाई कर दो तो MS ये कर सकते हो। अब ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन 1 सेकेंड। हाँ जी हाँ just now okay no worries I'm in the class so I'll call you chalo bye। so ये क्या हो गया, so this is weight of substance divided by weight of water of same volume। समझ आया। सो ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला। देखो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू weight of substance divided by weight of water of same volume। But what is weight of water of same volume? This is nothing but upthrust, isn't it? So weight of water same volume is like weight of water displaced by the substance, isn't it? So that is, so which is upthrust, right? So then we can say this is weight of substance divided by loss in weight of substance, correct? So we are only doing logical deduction, because if it is upthrust only, then that means it is equal to loss in weight of substance when it is submerged in water. Submerged in water. In water. Right? So what is it? So this is WS divided by WS minus W dash कर देते हैं। मतलब this is weight of substance in air, this is weight of substance in air minus its weight when it is submerged, that is equal to loss in weight, because when the weight is submerged it reduces. So this is written in your book as W1 divided by W1 minus W2. This is how it is. Have you understood it? तो हम इसको शुरू से काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं W1, ठीक है। Weight of substance we are taking in air as W1, so this is by W1, okay, W1, and here I will go ahead W1 minus W2. Now you can just, so this is just the different interpretation of the same thing. Okay, so what is W1? Weight of substance in air. Weight of substance in air. And what is W2? Weight of substance in water. W2 is weight of substance in water. And it is so easy to measure with the experiment, the second experiment, with the help of spring balance. Once when I am hanging in air, that will give me weight of substance in air. Then when I put it inside water, that will give me weight of substance in water. So the difference, just the ratio. So RD can be found for any substance easily with the help of this one. Clear?
So now if you know the RD of any substance, then how do you find the density? Just multiply the density of water. So and we know what is density of water. Right? So what is density of water? Have you written this side? ये लिख लो, ये बहुत important है. In this chapter, this is the only thing to be understood. एक बार ये समझ आ गया. So what is this? This is by Archimede's principle, right? By Archimede's principle. सब लोग लिख लो इसको, बुक के भरोसे मत रहो, लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में लिखना डिफिकल्ट है. Online students, how's it going? Who is listening to me? Yes, sir. Anish confirmed. Nilesh is not there, I think. Yes, sir. Sir, I'm there. Acha. And Spandan? Spandan is just like fooling us. Are you fooling us, Spandan? Yeah. He's watching football. अरे सर अर्जेंटीना हार रही है. 2-1 सर. 2-1 से अर्जेंटीना हार रही है. 2-1 सऊदी अरेबिया में 2 गोल करेंगे हासिल करेंगे. तो अगर अर्जेंटीना हार रही है, इसमें हमारी सेहत पे क्यों बुरा असर पड़ रहा है? अरे वो नहीं पता, वो बहुत लोग फर्क पड़ता है. ये फैन वाला, मैं भी जब तुम लोग की एज का था ना, तो मुझे भी लगता था यार बहुत लॉस हो गया है. मतलब मेरे को वैक्यूम फील होने लगता था, कुछ करने में अच्छा नहीं, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था ऐसा. तो मुझे बहुत टाइम लग गया उससे उबरने में, और फिर जब समझ आया तो मुझे लगा यार क्या फालतू की चीज़ कर रहा है. अच्छी बात है, नहीं पढ़ना चाहिए. अगर वो चीज हमारे से रिलेटेड नहीं है तो उसके लिए पढ़ना चाहिए. सर फालतू चीजों का फर्क है ना, मेरे रंग में पड़ता है. नहीं यार देखो, हॉबी इंटरेस्ट होना चाहिए. थोड़ा टाइम दुखी रहो यार, दिन भर तो दुखी हो जाओ ऐसा. भाई ठीक है, हमारे को टीम पसंद है. टीम पसंद वाली बात नहीं है ना, ये इसका आखिरी वर्ल्ड कप है मेसी का. अच्छा, उसके ऊपर से अगर ये वाला वो हार गया और अगर उसका फेवरेट है तो वो अलग चीज है, वो अलग बहुत ठीक है भाई. जब थोड़ी बार आपके बार खेलना देखा था तब दुख हुआ था मेरे को. अच्छा, इंटरनेशनल क्रिकेट में वो लेकिन देखो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई चलो तुमने इतने टाइम तक फेम लिया तो दूसरे बंदे को भी चांस मिलना चाहिए. अभी अगर हम धोनी कोई जिंदगी भर देखते रहे तो कल को अगर हमारे में भी क्वालिटीज धोनी बनने वाली, फिर क्या होगा भाई? धोनी भाई तो जमे हुए हैं. हाँ मतलब भाई वो अच्छी बात है कि वो रिटायर हुआ. he retired on a good note. हाँ, वरना तो निकालना ही पड़ता. ये टाइम पर क्या हो जाता है कि परफॉर्मेंस खराब होने लगती है, पीक पे निकल जाओ वो बेटर है. पैसे तो उनके पास इतने हैं, बाप रे, उनको कोई फर्क थोड़ी पड़ता है. They have so much money. Even now they are getting a lot of money for maybe they are not playing active cricket just to के साथ पैसा आ जाता है. किसी भी इवेंट में अगर वो आते हैं तो उसका फीस होता है. का बिजनेस ही होता है. There's so many businesses there. So we should not take it too hard. Entertainment value तक ठीक रखो. Good for him, but उसको कुछ problem हो रही है तो वहाँ पर रुक रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए. Because then you are affecting yourself, your career. Okay. यहाँ तक समझ आ गया सबको? तो अभी हमको ये और यूज करना पड़ेगा ये फॉर्मूला आगे, ठीक है.
तो ये हम कब निकाल सकते हैं, जब वो सॉलिड वाटर के अंदर इनसॉल्युबल, ठीक है, तब हम ये निकाल सकते हैं। अब अगर वो सॉलिड वाटर के अंदर सॉल्युबल हो तब क्या करोगे, तो उसका एक अलग टेक्निक है, वो बता दो, ये लिख लो मैंने लेफ्ट साइड लिख के। रिजॉल्व करने के बाद में माइनस करने का। अच्छा देखो एक चीज मैं बताना भूल गया, ये हमने पहले लिखा सबसे पहले है ना रिलेटिव डेंसिटी, बाद में हमने ये सब जब चालू किया था तो ये उसका हेडिंग क्या आएगा, तो इसका है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन of substance, solid substance insoluble in water. But and denser है, डेंसर है मतलब क्या होगा, वाटर का डेंसर तो सिंक हो जाएगा, तो डूबना चाहिए उसमें, तभी तो स्प्रिंग बैलेंस में वेट दिखेगा कि कम है या ज्यादा है। अगर वो फ्लोट होगा तो स्प्रिंग बैलेंस नीचे जाएगा ही नहीं, उसका वेट और लाइट हो जाएगा। वैसा है, मतलब वेट तो लाइट होगा ही, बट वो फिर भी पानी के अंदर जा रहा है, पानी से डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए हमने क्या लिखा, डेंसर है, राइट दिस हेडिंग। अब सेकंड हमको निकालना है सॉलिड सब्सटेंस सॉल्युबल इन वाटर बट डेंसर देन इट। ऐसा हो सकता है कि डेंसर है लेकिन सॉल्युबल, ठीक है, तो अब देखो उसका क्या करेंगे, ये मिटा दो लेफ्ट साइड, तो इसका खाली थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है फॉर्मूले में, पहले वाले का ही फॉर्मूला है, फर्स्ट वाले का। सेकंड वाला क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन of RD of substance soluble in soluble in water, okay, soluble in water and denser than, ठीक है, खाली क्या फर्क है, अब ये सॉल्युबल है, पहले केस में इनसॉल्युबल था तब हमको क्या फॉर्मूला मिला था, ये मिला। सो इन दिस केस कैसे निकलेगी रिलेटिव डेंसिटी, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, तो इसमें आरडी इज गिवन बाय, पहले क्या है, वेट इन एयर वो तो पता ही चल जाएगा क्योंकि एयर में तो सॉल्युबल नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में वेट इन लिक्विड, अब हम एक ऐसा लिक्विड लेंगे जिसमें वो सब्सटेंस सॉल्युबल नहीं है, उसमें उसका वेट, ओके, इन विच इट इज इनसॉल्युबल, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्मूले में वाटर आना चाहिए, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, समझ आया, दिस इज हाउ द फॉर्मूला गेट्स मॉडिफाइड।
वेट इन एयर निकाला उस सब्सटेंस का, कौन से सब्सटेंस का, जो सॉल्युबल इन वाटर है। बाद में उसका वेट इन लिक्विड में निकाला जिसमें वो सॉल्युबल नहीं है, और फिर उस लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी से हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमें उस लिक्विड का जिसमें वो सब्सटेंस सॉल्युबल नहीं है उसका रिलेटिव डेंसिटी मालूम होना चाहिए, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो फाइंड आउट करना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वो कैसे फाइंड आउट करें नेक्स्ट। ठीक, देखो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत इजी है, ये मिटा दो, ये समझ आ गया ना। सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है यहाँ पे, ऐसा लिक्विड हमको ढूंढना पड़ेगा जिसमें वो सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि वाटर में तो सॉल्युबल है। तो ये, तो इसलिए हमें लिक्विड का भी रिलेटिव डेंसिटी निकालने आना चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा, वो रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्मूले से निकलेगा। और एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। पहले दो फॉर्मूले थे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, ये सब सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, लेकिन अब क्या है, लिक्विड। तो जो ओरिजिनल डेफिनेशन है उसके हिसाब से क्या होगा, क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, बराबर है। ये होगा, जिस जिस लिक्विड का हमको रिलेटिव डेंसिटी निकालना है उसका डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर हम दोनों का वॉल्यूम फिक्स कर दें, सो दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, करेक्ट है। अभी निकलेगा कैसे, ये ऐसे निकलेगा, और बाय यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम क्या करेंगे, हम एक सॉलिड सब्सटेंस ले लेंगे, उसको पहले हम लिक्विड में डुबाएंगे, ठीक है, ठीक है। सो वो हमको क्या देगा, उसको हम लिक्विड में डुबाएंगे और यूरेका केन से कितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया उस लिक्विड का हम वेट ले लेंगे, ठीक है। बाद में उसी सब्सटेंस को अब हम वाटर में डुबाएंगे, वो भी सेम वॉल्यूम के वाटर का वेट रिप्लेस करेंगे, ठीक है, समझ आ गया। तो हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, सो देयरफॉर weight of liquid displaced by a body and this will be equal to, क्योंकि हम कैसे सेम वॉल्यूम फिक्स करें, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सेम बॉडी। ये फंडा समझ आ गया सबको, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, तभी तो हमारा वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है, दोनों में सेम वॉल्यूम तभी आएगा जब हम एक ही बॉडी को दोनों लिक्विड में डुबाएं और कितना वेट डिस्प्लेस किया वो फाइंड आउट कर ले। यहाँ पे हमने बाय यूजिंग, हम क्या लगा रहे हैं, हर जगह पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है।
तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी क्या होगा? हाँ, इट इज लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी, है ना? सो दिस इज इक्वल टू लॉस इन वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड divided by loss in weight of body in water. Oh yeah, पानी है ना? So this is equal to weight of body in air minus weight of body in liquid divided by weight of body in air minus weight of body in water. हो गया, इतना सिंपल है. So where weight of body in air, W2 क्या है? Weight of body in liquid, W3 क्या है? Weight of body in water. As simple as that. जो फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा उसमें W2 वेट ऑफ बॉडी इन वाटर था, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, तो ये हमको लिक्विड का RD रिलेटिव डेंसिटी दिया. ठीक है, और तुम्हें एक चीज याद रखना है, नोट हमेशा, एक बार रिलेटिव डेंसिटी मालूम पड़ गया तो डेंसिटी ऑफ वाटर दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन CGS यूनिट, and it is equal to 1000 kg per meter cube in SI units. तो किसी भी सब्सटेंस का एक बार हमें रिलेटिव डेंसिटी एक्सपेरिमेंटली पता चल गया, उसके बाद खाली हमको उसमें डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई करना है, सब्सटेंस का डेंसिटी जाननी है. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो ये सब यूज करके हम निकालते हैं. So all these experiments have used what? Archimedes' principle. तो ये लॉस इन वेट हमको क्या देता है? Upthrust, है ना? ये सारा हमारा Archimedes' principle है. ओके, तो इस तरह से हमारा ये यूनिट बी भी खत्म हो गया. अब तुम इस चैप्टर के यूनिट ए और बी के जितने भी ब्लू बॉक्सेस हैं वो सब पढ़ लो, पहले लिख लो फिर पढ़ लो. उसके बाद if you have any doubts, I clear that. After that, we'll go to the last part, which is a very small part. और ये हम सब कुछ कर चुके हैं इसमें. लास्ट वाला ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, कल ये थ्योरेटिकल डिस्कशन है वो हम करेंगे.
So one correction. This is not weight. Everywhere it has to be loss in weight, right? This is loss in weight. Just make a correction. Loss in weight. Okay. Because समझ आया ना? It is not weight. Weight करोगे तो फिर weight in liquid आ जाएगा. हमको loss in weight चाहिए. So unit A और unit B के सारे blue boxes revise करें. We have 5 minutes to do it. Or take 10 minutes. Then I'll start with C में एक छोटा सा formula है उसको derive कर देंगे. उसके बाद ये हमारा chapter ही बनते हैं. तो इसका हम लोग ने क्या numerical electricity yeah. They have critical electricity right. And it's a both will be the no exam next 9 December my comes out of that. 9 December. So anyway, we are meeting again on. Are you meeting in this week? No, not in this. तो हम 10 मिनट में क्या कर पाएंगे? Well, not now, but next week. Next जब भी lecture होगा ना, we'll start with. लेकिन इसके numericals बाकी हैं अभी. हाँ. जो करंट में करना है. स्कूल की क्या रिलेटिव्स को रहते हैं आईटी बच्चों को कैसे स्कूल है? अरे यार पूरा सीक्वेंस गड़बड़ हो रहा है. एक स्कूल में रहते हैं. तो बच्चों की वजह से. क्या करें? ये निकाला मैंने. ये एक्साइटेड हो गए सारे टॉपिक वही गए लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है फिर मैनेज करने में. बट मैं बता दूंगा मैं बोला था तो अलग से डाउट्स क्यों डाउट्स लेकिन अभी ये वीक नहीं होना है. ये तो कर लेता बट नेक्स्ट वीक मैं अवेलेबल हूँ. डाउट सॉल्विंग मेरा मैडम को पूछना जब भी मैं अवेलेबल हूँ ना तो डाउट सॉल्विंग even in weekdays he knows when I am available. चलो around like after 3 o'clock anytime. ठीक है ऐसे 3 to 4 ऐसा हो गया. जब मैं आगे बढ़ाऊं यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का पढ़ लो ब्लू बॉक्स एक बार कर लो 5 मिनट लगेगा ज्यादा ज्यादा. Only go through the blue boxes. That's the best way to revise any chapter. किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स अनीश नीलेश. नो सर. अरे स्पंदन No, sir. बीच में कहाँ चले गए थे? सर कुछ नहीं सर डिस्कनेक्ट हो गया रहूंगा सर क्योंकि सर यहाँ पर नेट इश्यू होता रहता फाइबर भी फिर ऑफ ऑन हो रहा था इसलिए.
अच्छा ऐसा है। बहुत अच्छा है। कैमरा बंद किसने करके रखा है? किसने बंद करके रखा है? वो जब सा है तब तक सबसे इसमें चालू हुआ फिर बंद हो गया। सर वो खराब है लगता है विंडो में। खराब है क्या? हाँ, हम लोगों ने किया वो अंकल का वो सर क्या हुआ? Can I clear the board now? So how do you find this chapter? Are you floating, sinking? What is your position? Floating, very good. सर partially floating. वही पाँच Okay, partially floating, but good, you are still floating, right? हाँ, not sad So actually. as long as you are hanging in there, it's good. बस इसके बाद ACPS में भी upthrust fluids का ही है। आप मैं अच्छा तो है। भाग जा रहा है यार, पास हो गया सर, स्कूल में फिजिक्स ही पढ़ रहे थे और सारी करते कितनी में लग रहा है? आज 4 फिजिक्स सर। It's all about comfort. The light, the fan. Switch on, switch off करो पहले आप नहीं चाहिए physics. किसकी दे रहे हैं physics? मतलब understanding देन तो जिसने बनाया उसकी है, but at least we know how to use it, right? That is because of physics. Okay. Because you are partly floating, अगर मुझे पूछना हो कि कितना हिस्सा तुम्हारा पानी के ऊपर है और कितना अंदर है, तो उसके लिए देखो for partly floating bodies. क्या होगा? Upthrust must be equal to weight of liquid displaced by submerged part of the body. You agree? है ना? For partly floating bodies, समझो ये लिक्विड है तुम्हारा और ये तुम्हारा बॉडी है, ठीक है? तो ये वाला जो पोर्शन है ये छोटा भी है वॉल्यूम, और जो फुल बॉडी का वॉल्यूम है वो कितना है? कैपिटल वी। समझ आई बात? पूरे बॉडी का वॉल्यूम है कैपिटल वी और जो सबमर्ज्ड पोर्शन है उसका वॉल्यूम है स्मॉल वी, ठीक है? तो अपथ्रस्ट देखो, अपथ्रस्ट किसके बराबर है? छोटा वी, क्योंकि वो सबमर्ज्ड पोर्शन छोटा वी, देन अपथ्रस्ट कौन लगाता है? लिक्विड लगाता है इनटू जी, ठीक? दिस मस्ट बी इक्वल टू, तो ये हो गया तुम्हारा अपथ्रस्ट। ये हो गया अपथ्रस्ट।
ठीक है. अब for floating bodies क्या होता है? Upthrust is equal to weight. Since so this upthrust above that thrust above upthrust will make the body float. That is, it will balance its weight. Right? That is, for floating bodies, upthrust is equal to weight of the body. अभी तो apparent weight 0 होगा, है ना? Upthrust क्या था? Small v rho Lg. What is the weight of the body? Capital V. Density of the body into G. Okay, so now G and G gets cancelled. Therefore, what do we get? V upon capital V. We get density of the substance upon density of liquid. Okay, this is, you can write S also, density of substance. So this is how you will get it. Now suppose the area of this body, if this was a cube, whatever is its area, right? And this is the height. Area into height will be volume. है ना? तो यहाँ पे height कितना है इसका? Let's say this is H2 and this is H1. Full height. For H dash. Let's take this as H dash. This H. समझ आ गया? So what is the height of the submerged portion? H dash. And full height of the body is H. Area तो दोनों का same ही है. So एक तो ये formula हो गया तुम्हारा. This can also be, sometimes question पूछता है कि how much portion of the body will be outside. तो उसके लिए हम ये formula use करेंगे. This will be A into H dash divided by A into H. So how much portion is outside? So how much is submerged? H dash is submerged. And H is out. So what is outside? H minus H dash is outside. So if you know H dash, then you subtract it with H. That is outside. Understand? So both the formula you can use. H dash upon H. This I am giving you from my side. So it is just the ratio of density of substance versus density of liquid. Okay. So where, what is H dash? Height of submerged part of the substance. Okay. Full height of the substance. So in your book, this formula is given. And this will help you calculate or solve the value. Okay. So with this, I think we have completed the entire chapter area. Okay. So what is this? Volume of the immersed part divided by volume of the whole body is equal to density of the substance divided by density of liquid.
So 5 मिनट हो रहे हैं. 4 मिनट. So punctual. And we have flotation of iron ship and flotation of human body. Okay. Flotation of submarines. Flotation of iceberg. These are all applications, right? Yes. So question is that if the density of the substance is more than density of liquid, it cannot float. So are we saying the density of iron is less than density of water and that is why ships float? भाई आयरन का डेंसिटी वाटर से ज्यादा है ना, शिप कैसे फ्लोट होता है? Displacement of water. हाँ, because उसका जो वॉल्यूम है ना शिप का, राइट? तो वॉल्यूम जितना है वो तो पूरा वॉल्यूम अंदर घुस रहा है, लेकिन शिप हॉलो है. जितना वॉल्यूम है उतना सॉलिड वाटर को रिमूव करना है. तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, that is too high and it is higher than the weight of the entire ship. तो entire ship solid नहीं है, उसके अंदर हवा है बहुत जगह. So the average density of the ship, which includes density of air plus density of iron, is much less than the density of the water, जो portion water का आता है. समझ आएगा? So in such situation we take the average density. तो average density में इतना तो मान लो आयरन था बार, लेकिन जो पूरा बाकी का क्या था, एयर. तो एयर की डेंसिटी तो बहुत कम है. ठीक है? That's how the average density of iron जिससे शिप बनाया है plus the air is less than the density of water. ठीक है? ये पहला पार्ट हो गया. है ना? तो loaded ship submerged more while an unloaded ship is less submerged. Right? Loaded ship का weight बढ़ेगा तो वो ज्यादा submerged होगा. ठीक है? A ship begins to submerge more as it sails from sea water to river water. क्योंकि river water में density sea water से कम होता है, इसलिए से उसमें ज्यादा डूबेगा. ठीक है? फिर there is something called as clean soil line. Ship के ऊपर एक line होता है, देखो. वो line से ज्यादा उसका उतना ही लोडिंग करना चाहिए जिससे फ्रेश वाटर में, ठीक है, वो लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज इट विल सिंक. Plimsoll line is a safety mark. तो लोडिंग करते टाइम से घुसता जाएगा पानी में. Plimsoll line पहुंच गया, अब लोडिंग करते. ठीक है? अब देखो, अब अनलोडेड शिप जो है वो बहुत ऊपर रहेगा. तो अनलोडेड शिप में ऊपर है तो उसका सीजी ऊपर आ गया, then it is in unstable equilibrium. तो हवा से भी घूम सकता है. एक बार सीजी जो बेस है ना, उसका सीजी जो है अगर ऊपर है और बेस उसका नैरो है, उतना ही बेस सपोर्ट कर रहा है, तो शिप टिल्ट हुआ और उसका सीजी बेस से बाहर गया तो फिर टॉपल हो जाएगा. तो हम इसको क्या करते हैं, उसके अंदर सैंड फिल करते हैं या स्टोन फिल करके उसको कुछ वेट दे देते हैं. इट इज कॉल्ड बैलास्टिक, राइट? व्हाट इज इट कॉल्ड? बैलास्ट. आइदर सैंड या स्टोन फिल करके उसके सीजी को हम नीचे लेके आते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाता है, फिर विंड से वो टॉपल नहीं. ठीक है? तो वैसे ही फ्लोटेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, अभी ह्यूमन बॉडी में बोन्स है, ठीक है, तो एवरेज डेंसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर. तो हम लंग्स में अगर एयर भरेंगे, जो हम बात कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी का एवरेज डेंसिटी वाटर से कम हो जाएगा, देन वी कैन फ्लोट. अब मैं पानी में घुस जाऊं फिर रिपीट हो जाता है. You will float that. I have tried it. Since 7 months करते हैं, I have tried. तो फ्लोटेशन के लिए हमको क्या करना चाहिए, लंग्स में जितना ऑक्सीजन भरेंगे उतने देर तक फ्लोट करेंगे. देन यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ ब्रीथिंग, जिससे प्रेशर लंग्स में बॉडी रहे व्हाइल वी आर इन वाटर. दूसरा, इट इज इजी टू स्विम इन सी वाटर देन इन रिवर वाटर, बिकॉज़ सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है. हाँ सर. तो फ्रेश वाटर में हम इजीली डूब जाएंगे.
नहीं, the way God channel is said कि हाँ वो जो पेड़ था उस वजह से आदमी डूब जाता है. That's जो है इजराइल के आसपास डेड सी में आदमी नहीं डूबता है, वो उसकी डेंसिटी सैलिनिटी ज्यादा है. सैलिनिटी मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है उसकी डेंसिटी. Therefore man can easily swim in dead sea, तो उसका नाम डेड सी क्यों है? क्या सर क्योंकि उसमें इतना सैलिनिटी है कि आई थिंक वो स्किन के लिए बुरा बनता है. अरे नहीं, क्योंकि there are no organ like no belly. हाँ पर इतना No sea उधर creatures, मरीन लाइफ ही so नहीं. much saline that it is difficult for them to survive. No nourishment for them. इनको problem. So likewise here flotation of submarines और वो पढ़ो next class में I will clear that. ठीक है? Obviously So this is how पानी में swimming क्या है? so try to solve numericals if you are taking SCS. Try to take numericals solved examples उसे देखें तो अच्छे से clear होगा. Well, we will take class. थैंक यू सर. 10 रुपए लगेगा. ये पकड़ हाँ. 30 रुपए लगेगा. रुक जरा दे नोट. वही अच्छा. 15 साझा आईडी नंबर बोलते हैं. देखो और कुछ चाहिए जो भी हो. अरे देखो और कुछ खाना है अकॉर्डिंगली पैसा लेते हैं. बस ना